नमस्कार। आज हम जॉन डन की मशहूर कविता कैनोनाइजेशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह इस कविता को भी हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करेंगे। ये जो कविता है थोड़ी लंबी है, इसमें 5 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा 9 लाइन्स के हैं। हर स्टैंजा में 9 लाइन है, तो इस प्रकार से देर आर 45 लाइन्स in this poem. So let me tell you guys that I am going to deal with this poem in 2 parts. In this particular part, I am going to deal with the first 3 stanzas, and next 2 stanza I will deal in my next video. So I just ask all of you guys to watch my both of the videos uploaded by me subsequently. तो दोनों वीडियो अपलोडेड वीडियो आप लोग देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में 3 स्टेंजा, शुरू के 3 स्टेंजा, और नेक्स्ट पार्ट में शुरू के लास्ट के 2 स्टेंजाज हम डील करेंगे। तो इस जो पोएम है, जो कैनोनाइजेशन, हमने लास्ट वीडियो में मेटाफिजिकल पोइट्री के फीचर्स को डील किया था, उसको रिप्रेजेंट किया था, उसको एनालाइज किया था, और इस पोएम को एक्सप्लेन करते समय हम उन सब फीचर्स को कनेक्ट करेंगे, एंड आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू दैट हाउ दिस पर्टिकुलर पोएम इज टिपिकल मेटाफिजिकल पोएम. It does bear all the features of metaphysical poetry. You will come to see all these things in my explanation and analysis. तो कैनोनाइजेशन जो शब्द है, कैनन शब्द होता है, एक कैनन का अर्थ होता है तोप या गोले, और एक कैनन जो कि इसमें है, उस कैनन जो शब्द होता है कैनन, उसका अर्थ होता है, कैनन इज द टर्म यूज्ड फॉर सच ए थिंग or such a person which turns out to be the main feature or turns out to be the trend setter for the people. जो लोगों के लिए ट्रेंड सेट करता है या मेन फीचर, मेन फिगर्स के रूप में होता है, उसे कैनन कहा जाता है। वो मेन फिगर वर्शिपेबल भी हो सकता है। तो कैनोनाइजेशन को हम एक दूसरा टर्म देंगे, इट इज़ माई ओन ओपिनियन, दैट इज डीफिकेशन। डीफिकेशन मतलब होता है देवता तुल्य बनाना। डीटी मीन्स देवता, एंड डीफिकेशन टू मेक समबडी एज अ डीटी। अब ये कैनोनाइजेशन है, ओवरऑल ये पोएम जो है दैट इज अ लव पोएट्री। दिस इज अ लव पोएम। इसमें जो स्पीकर है, ही इज एड्रेसिंग समवन, एंड दैट समवन इज डिस्टर्बिंग द स्पीकर इन हिज एक्ट ऑफ मेकिंग लव। तो उसको ये किस तरह से हटाता है, दूर करता है, उसकी उसे वो डिस्टर्ब ना करे अपने इस एड्रेस में। आइए हम देखते हैं, और उसकी यही चीज़ है जो इस पोएम को ड्रामेटिक बनाती है। सो दैट हैज़ अ ड्रामेटिक सिचुएशन इन इटसेल्फ, एंड इट हैज़ अ एब्रप्ट स्टार्टिंग, सडन स्टार्टिंग। इसमें ऐसा लगता है कि इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम देयर इज समवन इनविजिबल। तो उससे वो क्या कह रहा है? फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, आज चाइल्ड मी फॉर माई गाउट, माई 5 grey hairs are mine, are ruined fortune flout, with wealth you stay, your mind with arts improved, take you a course, get your place, observe his honor or his grace, or the king's realm, or his staff face, contemplate what he will approve, so you let me love. Overall, he just want to keep the invisible person who is disturbing him away from himself. क्या कह रहा है उससे? फॉर गॉड से, भगवान के लिए, फॉर गॉड से होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग, कीप साइलेंट, जुबान अपनी बंद कर लीजिए, एंड लेट मी लव, एंड आस्किंग द इनविजिबल पर्सन टू नॉट डिस्टर्ब द स्पीकर इन द एक्ट ऑफ लव,
भगवान के लिए आप अपनी जुबान बंद कर लीजिए और मुझे प्रेम करने दीजिए। दिस इज द लिटरल हिंदी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। और चाइल्ड मीन पैल्सी, पैल्सी सिकनेस, वीकनेस। फॉर माई गाउट, palsy and gout, these two words stands for physical weakness or sickness of the lover. Physical weakness or sickness of the lover. Child me palsy for my gout. He, that means the speaker, asks the invisible person to scold, फटकारने के लिए, बुरा भला कहने के लिए, क्या मुझे मेरी कमजोरियों के बारे में भी बुरा भला बोलिए। For my gout, whatever the physical weakness does the lover have must be subjected to be scolded by those invisible person। ठीक है, उसे उसको भी आलोचना करनी चाहिए, जो भी शारीरिक कमजोरियां करे वो। My 5 gray hairs are ruined fortunes flout, flout again, criticize. Flout means criticize. My 5 gray hairs reflects the old age. इसका मतलब है बुढ़ापा। 5 gray hairs. Ruined, spoiled. Ruined means spoiled. Fortune, वो कह रहा है उस इनविजिबल व्यक्ति से कि फ्लाउट मीन्स क्रिटिसाइज करिए माई 5 हेयर्स, 5 ग्रे हेयर्स, मेरे इस बुढ़ापे को आप क्रिटिसाइज करिए, इसकी आलोचना करिए। ही आस्क हिम इवन टू क्रिटिसाइज हिज स्पॉइल्ड फॉर्चून्स, उसकी बर्बादी को भी क्रिटिसाइज करे वो। बट व्हाट द स्पीकर वांट्स टू बी अनडिस्टर्ब्ड एंड ही अलाउज the invisible person to criticize all these things. Flout, ruin fortunes flout with wealth. Your state, your ruin mind with arts improve. And then he asks that invisible person to go and to do something which may improve his state of mind. वो भी आर्ट्स करना चाहिए। या किसी आर्ट के बारे में क्रिटिसाइज करिए, किसी कलात्मक वर्क को क्रिटिसाइज करिए ताकि आपका दिमाग इंप्रूव हो जाए। मीन्स ही जस्ट वांट्स टू कीप हिम अवे एंड टेक यू ए कोर्स, गेट यू प्लेस। जाइए आप कुछ और करिए, अपना कोई और कार्य करिए। एंड गेट यू प्लेस, कहीं और चले जाइए। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस or the king's or his stabbed face। फिर उसे कह रहा है जाइए किसी राजा के सम्मान के बारे में सोचिए, उसकी कृपा के बारे में बात करिए, या फिर उन सिक्कों के बारे में, स्टैम्प्ड फेस, या फिर उन सिक्कों के बारे में जिस पे उस राजा का चेहरा बना हो, उसके बारे में सोचिए, उसको कलेक्ट करिए। मीन्स ही अगेन आस्क द इनविजिबल पर्सन टू गो अवे, keep himself busy in so many other activities like collecting the coins stamped with the king's face, like thinking about his honor and also about the grace of the king, राजा के सम्मान और राजा की कृपा के बारे में सोचिए। या फिर contemplate what you will approve, या फिर जो कुछ भी सोचिए, contemplate means कुछ भी वो चीजें सोचिए, what you will approve, जो आपको अच्छा लगे। प्रूव मीन्स एग्री होता है, लेकिन यहाँ पे व्हाट यू लाइक, या जो आपको अच्छा लगे उसके बारे में सोचिए। लेकिन शो विल लेट मी लव, शो यू विल लेट मी लव मीन्स बाय कीपिंग योरसेल्फ बिजी इन सो मेनी अदर एक्टिविटीज। इस तरह से अन्य जो ऊपर कार्य गिनाए गए हैं उसमें व्यस्त रह करके वो इस स्पीकर को डिस्टर्ब नहीं करेगा और उसे प्रेम करने दे, ऐसा स्पीकर कह रहा है। मीन्स अगेन लेट मी एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश। Actually, somebody is disturbing, some invisible person is disturbing the speaker who is busy in making love with his beloved. So he asked that invisible person
not to disturb him. So in the name of God, he asked him not to disturb him. And at the same time, he wants to advise him to keep himself, the lover wants to advise that person to keep himself busy in so many other things. For example, he also allows him to scold the speaker for his old age. उसे बुढ़ापे के लिए उसको फटकारे, for the physical weakness that the lover is supposed to have. उस शारीरिक कमजोरी के लिए एक्सप्लेन करिए. And even for the old age. And he also asked that invisible person to go and keep himself busy in the course of some activities. उसमें अपने आप को व्यस्त करे. And also to go and keep himself busy in gathering the coins that is stamped with the face of the king. तो इस तरह के अलग अलग कार्यों में बिजी होने के लिए कहता है. और इस तरह से जब वो बिजी होगा कराए कि लेट मी लव, मुझे प्रेम करने दीजिए. he doesn't want to be disturbed by that person at any cost. Next stanza, alas, alas, who is injured by my love? What merchantship have my sighs drowned? Who says my tears have overflowed his ground? When did my cold a forward spring remove? When did the heats which my veins fill add one man to the plague bill? Soldiers find wars, and the liars find out still litigious men, which quarrel move, though she and I love, though she and I love. यद्यपि मैं और वो, यानी कि स्पीकर और उसकी बिलवेड, both of them love with each other, एक दूसरे से प्रेम करते हैं. और यहां से अब देखते हैं, alas, alas, who is injured by my love? The speaker of this poem wants to know the person who is hurt by the making of love of the speakers in this poem. कौन ऐसा है जो कि हर्ट हुआ है, इंजर्ड, घायल हुआ है, मीन्स दुखी हुआ है उसके प्रेम के कारण. What merchantships have my sighs are drawn? My sighs means I am. The long breathing out of frustration, out of some pain. तो ये पेट्रार्कन जो कंसीट्स है हाइपरबोलिक वे में, उसको यहाँ पे एक तरह से रेफरेंस हम इनडायरेक्टली समझ सकते हैं. मर्चेंट, ऐसे कौन से मर्चेंट की शिप है, व्यापारी की जहाज है जो इसकी आहों ने डुबो दिया है, ड्राउन. Who says my tears have overflowed his ground? और ऐसा कोई है इस दुनिया में जो ये कह रहा है कि इसके जो टीयर्स हैं उसके फ्लड के कारण पूरी जमीन डूब गई है, ओवरफ्लोड. Means nothing is hurt, nothing is disturbed by the process of making love. He wants to know that who is there in this world who is affected by the process of making love by this of these speakers. कौन है ऐसा जो ऐसा फील कर रहा है? When did my cold a forward springs remove? Forward, advance, spring season, remove, हटाना, keep away. ऐसा कब हुआ है जब उसकी ठंडी आहों ने, जो कि कोल्ड के रूप में मेटाफर यूज किया है, आने वाली स्प्रिंग को, फॉरवर्ड स्प्रिंग आने वाली बसंत ऋतु को रिमूव मीन्स केप्ट अवे. ऐसा कब हुआ है जब उसके ठंडी आहों ने बसंत ऋतु के आगमन को दूर कर दिया हो या डिस्टर्ब कर दिया हो. मीन्स नथिंग इज डिस्टर्ब, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन स्पाइट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लव, इन स्पाइट ऑफ द स्पीकर्स लविंग विद हिज beloved. कुछ भी नहीं डिस्टर्ब है, सब कुछ हो रहा है. And when did the heats which my veins fill add one man to the plague bill? प्लेग उस समय फैलता था, प्लेग में लोग मरते थे. तो स्पीकर ये भी पूछ रहा है कि when did the heat which my veins fill, ऐसा कब हुआ है जब उसकी गर्म सांसों की गर्मी के कारण कोई ऐसा व्यक्ति है जो अफेक्टेड हुआ हो, जो मरा हो और जो कि प्लेग के बिल में ऐड हो गया हो. मीन्स ही ऑल्सो जस्ट वांट्स टू नो दैट
when it happened that the person died just because of the heat of emotions, heat of feelings of this speaker and his beloved, when he happened to be dead and added to the list of the dead people बिकॉज ऑफ प्लेग। ऐसा कब हुआ है कि प्लेग के कारण मरे हुए व्यक्तियों की लिस्ट में एक ऐसे व्यक्ति का नाम चला गया हो जो इसके फीलिंग्स के कारण हुआ। सोल्जर्स फाइंड वार एंड लायर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। सोल्जर्स फाइंड वार, सिपाही सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं, एंड लायर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन। लायर्स का जो काम है कि ऐसे व्यक्ति जो लिटिजियस मैन, ऐसे व्यक्ति जो कोर्ट में जाते हैं मुकदमे के लिए, लायर्स को भी ऐसे वकीलों को ऐसे व्यक्ति अभी भी उपलब्ध हो रहे हैं विच करंट मूव, जो कि आपस में लड़ते हैं, कोर्ट में जाते हैं। मीन्स एक्टिविटीज ऑफ लायर इज गोइंग ऑन ऑल्सो इवन एट द स्टेज व्हेन द स्पीकर एंड हिज बिलवेड मेक लव विद ईच अदर। जब स्पीकर और उसकी बिलवेड एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं तब ये सारी एक्टिविटीज हो रही है। तो ये पूछ रहा है कि क्यों, क्या हो रहा है। देयर इज नथिंग अफेक्टेड बाय द स्पीकर्स मेकिंग लव हिज बिलवेड, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, नो वन इज इंजर्ड, नो वन इज हर्ट, नो शिप ऑफ द मर्चेंट इज ड्राउन्ड because of the size which the lover and beloved takes out of their frustration, sometimes out of their separations, when or what are the ground which is overflowed by the tear of frustrations, so nothing is affected. Again he asked that there is no man added to the list of the dead people because of the plague, which might have been affected with the cold breathings, the frustrating size of the lover and beloved. Soldiers are fighting the wars, liars are getting their customer in the form of those persons who are going to the courts in order to file their writ. Soldiers are fighting, so nothing is affected when the speaker loves his beloved. In these two stanza, first and second stanza, first stanza he stops, second stanza he put forward that everything is going on unaffected by the activities of the speakers, and in the third stanza, let me explain it. Call us what you will, we are made such by love. Here कहिए जो कुछ कहना हो आपको कहिए, हमें बुरा भला whatever arises in the mind of those invisible person, call us what you will, जो आपको पसंद हो, जो आप चाहो मुझे कहिए, but we are made such by love, means they have been brought to the stage only by the emotions, by the process of love. So this is not call us what you will, we are made such by love. हम लोगों को आपको जो कुछ कहना हो कहिए, हम लोग इस अवस्था में इस प्रेम के कारण ही आए हैं। मीन्स वट एवर द स्टेटमेंट इज गिवन बाय द पर्सन हु इज डिस्टर्बिंग हिम विल नॉट अफेक्ट दिस पर्सन बिकॉज दे हैव रीच्ड टू सच एन स्टेज that can never be affected, that can never be influenced by any external forces. जो कुछ कर they have their tolerance power has gone up. तो इसलिए कह रहा है मुझे जो कुछ कहना हो कहिए। हम लोग इस अवस्था में उस प्रेम के कारण आ गए हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। Call her one, me another fly. Call her one, me another fly. आप दो या मेटाफर ऑफ फ्लाई करा, वो उसे भी आप फ्लाई कहिए और मुझे भी एक दूसरे तरह का फ्लाई मान लीजिए। तो दे आर ऑल्सो एबल टू टॉलरेट एनी काइंड ऑफ मेटाफर, एनी काइंड ऑफ एपिथेट, एनी काइंड ऑफ द वर्ड्स गिवन टू देम बाय द पीपल हु डिस्टर्ब देम। तो मुझे एक फ्लाई कहिए, उसे भी दूसरा कहिए। वी आर टेपल्स टू,
एंड एट अवर ओन कास्ट टाइम। ये दो है सेल्फ स्टेज ऑफ सेल्फ एक्सटिंक्शन, स्टेज ऑफ सेल्फ एक्सटिंक्शन मीन्स खुद को, अस्तित्व को भूल जाने वाला अवस्था। उसमें पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी इज नो मोर। सो वी आर टेपर्स टू एंड एट अवर ओन कास्ट डाई। वो फ्लाई भी होने के लिए तैयार हैं। दे कंसीडर देमसेल्फ टू बी लाइक ए फ्लाई एंड दे आल्सो टेपर कैंडल। वे लोग अपने आप को उस कैंडल के भाव समझ रहे हैं, उस कैंडल की तरह, उस मोमबत्ती की तरह जल रहे हैं जो स्वयं जल करके नष्ट हो जाती है, अस्तित्वहीन हो जाती है। एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लव। मीन्स दे फॉरगेट देयर ईगो, दे फॉरगेट देयर इंडिविजुअलिटी, they are self extincted only out of their noble love. So we are typos too and at our own caste die. We in us find the eagle and dove. Eagle is the symbol of strength, means masculinity, and dove is the symbol of gentleness. तो both of them, वो दोनों एक कॉम्बिनेशन हो गए हैं। दोनों चीजें अपने आप को समाहित, अलग अलग चीजों को समाहित कर लिए, स्ट्रेंथ को भी, जेंटलनेस को भी, मैस्कुलिनिटी को भी और फेमिनिटी को भी। सो द स्पीकर एंड हिज बिलवेड हैज कंबाइंड विद इन देमसेल्व्स both masculinity and femininity, strength and gentleness. The phoenix riddle had more wit by us. Even he is just alluding to the myth of phoenix bird. वो phoenix bird के myth को भी allude कर रहे हैं. What is phoenix bird? phoenix bird मरती है और अपने ही उस राख के से फिर से जिंदा होकर के वापस अपने जीवन में आ जाती है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ डेथ एंड रिजरेक्शन, मौत और पुनर्जीवन। तो फोनिक्स रिडल इज आल्सो देयर, मीन्स फोनिक्स की जो रहस्य है, फोनिक्स बर्ड का जो रहस्य है वो भी बहुत ही प्रासंगिक लगता है। इट इज वेरी मच सिमिलर, वेरी मच कंटेक्चुअल इन द मैटर ऑफ देयर लव मेकिंग प्रोसेस। तो कह रहा है ये फोनिक्स की जो रहस्यमयी कहानी है वो भी बहुत ही कंसर्न लगता है, बहुत ही पैरेलल लगता है हमारे माध्यम से। फोनिक्स रिडल हैड मोर विट बाय अस, we two being one are it, means we two means speaker and his beloved are just like the phoenix bird who in the process of making love forget their own individuality, forget their own life for a moment. Here the poet also refers to the stage of orgasm, extreme excitement during the physical relationship. So they come to the stage of being dead and then come to be alive again. तो phoenix bird की स्टेज को, रिडल को बहुत ही प्रासंगिक माना है उनके माध्यम से। So us by us two being one are it. So to one neutral things both sexes fit. So in such a way both sexes means masculinity and femininity have come to be mingled, come to be mixed within one personality, means within one means one that is turned out to be after the emotional relationship of lover and his beloved, speaker and his beloved. So one neutral thing both sexes fit. We die and rise the same and prove mysterious by thus love. So in the process of making love they both turn out to be very much mysterious like the phoenix bird. और इस तरह से वो एक दूसरे से प्रेम करते हुए वो एक मौत वाले स्टेज पे आते हैं और पुनर्जीवन को प्राप्त करते हैं। सो ऑल दिस हैपेंस ओनली इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लव। दिस इज द स्पीकर्स विटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज ओन मेकिंग ऑफ लव। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। कविता की एक्सप्लेनेशन है, किस तरह वो अपने आप को अपडेट
प्रूव करता है कि कितना नोबल लव है उसके लिए। तो अगले पार्ट में हम नेक्स्ट स्टेंजा को हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको परफेक्ट एनालिसिस चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको देखना मत भूलिएगा। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मेरे सारे अपलोडेड वीडियोस उनको प्राप्त हो सके। नमस्कार।